Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh from Dargah Ajmer Sharif, Astana Aliya, Muqaddas Astana of Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti radiyallahu anhu. We are here at the blessed courtyard of Sultanul Hind Hazrat Khwaja Garib Nawaz, and inshallah from tomorrow morning 4 a.m. before the Salat al-Fajr, we are all preparing to open the blessed doors of Dargah, all the gates of the Dargah, inshallah, for welcoming the Ashiq Khwaja Garib Nawaz, the devotees of Khwaja Garib Nawaz who have been longing to present themselves at the blessed feet of Khwaja Garib Nawaz for the last 6 months, almost 172 days of the spiritual longing. Alhamdulillah, all the final preparations are going on. As you can see, the norms of social distancing, some of the circles that have been placed on the floor for all the devotees who will be offering their salam and their greeting of peace, their respect at the blessed Dargah of Khwaja Garib Nawaz. So to maintain the social distance and yet continue to offer their respect, as you can see, all these preparations inshallah for tomorrow morning. The closing ceremony is being observed now, the Kadka. In some time, the closing ceremony, the daily closing ceremony of the Dargah. This is the blessed Shijra Mubarak of Khwaja Garib Nawaz, Ruhani Khwaja Khwaja Chisht Ali Bahish. The Shijra Mubarak of Chishtiya Silsila from the Holy Prophet, peace be upon him, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, to Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti, Khwaja Chisht. This is the Sandali Mosque where some of the markings with tapes have done for people who will be offering the namaz, the salat and the jamaat. So the distance has to be maintained throughout their presence in the Dargah Sharif. So alhamdulillah, with the will of Allah subhanahu wa ta'ala,
and the blessing of Khaja Gharib Nawaz, inshallah. The Dargah Ajmer Sharif has been under final preparation to open up tomorrow morning 4 a.m. This is the Sandali Mosque where they offer their namaz and they meditate, they pray. So with social distance norms and all the government guidelines to prevent and take precautions against the COVID-19, the coronavirus, inshallah, all the preparations have been made. And the healing comes from Allah Subhanahu wa Ta'ala. The cure comes from Allah Subhanahu wa Ta'ala. So we pray that whoever has been suffering, whoever has been diagnosed with this virus, they get healed, and all the prayers for people to get healed, inshallah, and the blessed calling to Ajmer Dargah Sharif soon for all. The Qawwali audition, they have put it at distance. So all these marks that you see on the floor are for the distance that the volunteers are working with. People, women, children, men, they all sit in the Dargah Sharif at a distance. At the blessed dome of Khaja Gharib Nawaz. The daily clothing ceremony, the Kalka ceremony is underway. Which have been observed from last 800 years every day by the Khuddam Khaja Gharib Nawaz, the Dinashri family, who have been serving from last 800 years every day. Even during the last 6 months during the global lockdown, the daily services and the practices of serving inside the blessed dome of Khaja Gharib Nawaz continued on daily basis by the Khuddam Khaja Gharib Nawaz, the Gadin family, the Ajmer Sharif, the Sayyid Sadat family, the Ajmer Sharif. So we pray for all that the blessed Wasila of Khaja Gharib Nawaz, that Allah Subhanahu wa Ta'ala accept the prayers and the du'as, the supplications of all. And may all the devotees and the Ashiq Khaja Gharib Nawaz are soon called to visit Dargah Ajmer Sharif to fulfill their longing and belonging to the blessed Astana of Dargah Ajmer Sharif. Khaja Muinuddin Hasan Chishti. Let's have duas from Ajmer Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
बेशक बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। A greeting of peace from Ajmer Dargah Sharif. This morning after Salat al-Fajr, as today after 172 days, Dargah Ajmer Sharif has been open again for people to present their salam, devotees maintaining the social distance and the markings on the floor. So Alhamdulillah, it's a blessed morning. The spiritual longing and belonging to Khwaja Gharib Nawaz of lakhs and lakhs of devotees, pilgrims, darwish, fuqara, murids, Ashiq Khwaja Gharib Nawaz are here with a lot of devotion, patience, sabr, waiting for their turn to go inside and offer their salam. It's a spiritual freedom which has been bestowed upon everyone, and there's a sparkling light of joy and sense of gratitude among all. Alhamdulillah. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله حیدریم کلندرم نستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کی سگے خوئے شیری یزدانم. بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی.
मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिराग चिश्ती यारा रोशना है। इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिराग चिश्ती यारा रोशना है। चिराग चिश्ती यारा रोशना बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रहीम दुआ है तेरा तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। तेरे गदा है गुनहगार और मुत्तकी दोनों, बुरे भलों पे तेरा पहले आम या ख्वाजा। या हुजूर मौला गरीब नवाज, आपके तमाम चाहने वालों की खैर हो। मौला आपके तमाम चाहने वाले जो गुलामों के पास दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, मौला सबकी दरख्वास्त कबूल फरमाइए। सबके दुख तकलीफ परेशानियों को दूर फरमाइए। सबकी मुश्किलों को आसान फरमाइए। मौला गरीब नवाज, ये जो बला बीमारी फैली हुई है, इस बला बीमारी को आलम इंसानियत से दफा फरमाइए। मौला गरीब नवाज, इस बीमारी की वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं रहा, मौला गैब से मदद फरमाइए। सबकी रिज़्क़ खुशाई फरमाइए। सबकी मुश्किल खुशाई हाजत रवाई फरमाइए। मौला गरीब नवाज, ये गुलाम असद अली हाजिर है हुजूर, ये तमाम आपके शहदाई जाकिर आबिद जाकिर बबलू आबिद सबकी हाजिरी कबूल फरमाइए। मौला ये जितने गुलाम हाजिर हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमाइए। हुजूर इन सब की जायज मुरादों को हासिल फरमा दीजिए। सबकी दुआओं को कबूल फरमाइए। गैब से मदद फरमाइए। आपके दामन के चादर के साए में रखिए। आपकी हिफाजत में, आपकी पनाह में रखिए। मौला गरीब नवाज, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। जो कर्जदार हैं कर्जदारी से निजात अता फरमाइए। जो बे औलाद हैं नेक और साले औलाद अता फरमाइए। जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमाइए। मौला जिनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं, उन माँ बाप को बच्चे बच्चियों के फराइज से अदायगी की तौफीक अता फरमाइए। लाज रखिए हुजूर माँ बाप को बच्चे बच्चियों की खुशियां देखना नसीब फरमाइए। गरीब नवाज रहम फरमाइए। सबका भला, सबकी खैर हो मेरे आका। सबके भले में गुलाम की कौम का भला। गरीब नवाज